others will keep joining. So let's begin. Good afternoon, everybody. At the outset, I'd like to place on record our heartfelt gratitude on my personal behalf, as well as on behalf of Earthcare Foundation and the whole team, to each one of you mentors who have, taken this a very positive step to contribute to the society, and they have, taken the responsibility of mentoring, guiding those poor and underprivileged students of the society. So thank you very much, each one of you, and we are really grateful to each of you. Now, mentorship is a very important part of life, in my opinion. Because, when you are a small child at home, you get mentored by your parents, your siblings. When you go to school, your peer group, your teachers, similarly in college and all. So mentorship continues through the whole life. And that is why we thought, that in our project also, the students whom we are trying to empower, that is poor students and underprivileged ones who live in very small towns and small villages of the country all over, will need some hand-holding, will need some, a sort of a guidance, will need some a person who's like a friend, a philosopher and guide to take them forward, to put them at ease, when they are studying for these courses. And, mentorship का ख्याल हमारे दिमाग में इसलिए आया कि I have gone through this whole thing in my own life. I come from a small district of Bihar, that is Sitamarhi, although small but very well known because goddess Sita was, she came out of the Mother Earth there. Important, but yes, it was a small district, small town, small place. And I belong to a small village of that district, I know. And I'm talking of 1955-60, when I used to study in that school in my village. Or, we had to cross 3 rivers to reach our school every day. You can imagine that the conditions, those were the days. And, in the rainy season, when the rivers were full, then naturally the school was closed. So all of us used to be very happy. Chalo, school band ho gaya, acha hua, school hi jana padega. But, somehow I completed my matriculation at that time. And because of my position in the state, I got admission in the Patna Science College. Patna Science College, a very prestigious institution, not only in India, all over Asia at that time, even today. But when I went there, I found a lot of my fellow students who had come from towns, they were speaking English, they used to speak very fluent English. So मुझे भी जोश आया कि मैं भी अंग्रेजी बोलूं, मैं भी try करूं. But, whenever I tried, I opened my mouth to speak English, these guys used to start laughing at me. They started making fun of me, ridiculing me, That was very depressing. Slowly and slowly, I got so depressed to a point that I felt like leaving that prestigious college and going back to my home village in Sitamarhi. Somehow, 2 of my teachers in Patna Science College, somehow they had watched this development in my demeanor, you can say, or my behavior in about 15-20 days. And they called me and they talked to me. When I told them this is the problem, they became, my sort of friends, philosophers, and guide in life. They guided me how to move forward, how to equip yourself to speak English. And not only speak English, to do everything in life, how to take responsibilities, how to face challenges. And that is what mentorship is all about. And that mentorship of those 2 teachers changed my life. I completely changed. All the depression, वगैरह तो कहाँ चला गया पता नहीं. And I became a person who was very confident in spite of all odds that yes, I will fight and win. And somehow I owe it to those 2 teachers of mine that even today
I have that tenacity and that feeling inside me, in my character, that yes, any obstacle, any challenge, I'll fight and win. So what I'm trying to tell you is that mentorship is very important, and that's why we thought in this project, those children, those young boys and girls whom we are going to sort of empower, we need to give them some mentors who are people in life, who are educated, who have done well, who have some feeling towards guiding and helping the downtrodden, the have-nots, the poor and underprivileged people. So this was about why we brought in mentorship. Some of you who have not been with us, who have joined only as a mentor and who have not been following our NGO Earthcare Foundation, just for your information, I mean, I would like to share about Earthcare Foundation also, because when you are mentoring the students on behalf of Earthcare Foundation, you should know about the organization also. This organization, this NGO, we had formed in 2005. So it is an 18 years old organization. You can say it has become an adult now. And we have been doing work in the field of environmental conservation, tree plantation, tree conservation, daily ridge conservation and all in the beginning for about 3-4 years. Then we noticed that there are a lot of very poor children of migrant labor, who comes from various states to a metropolitan city like Delhi to earn their livelihood. तो बेचारे माइग्रेंट लेबर गरीब मजदूर होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, जैसे तैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं. And so they are not able to send their children to any good school. Somehow, even if the child goes to a municipal school, the standards of teaching and academics there leaves much to be desired. So these children, we found lots of them loitering around whole day here and there, indulging in lots of wrong things, indulging in, fighting with each other, fighting with their neighbors, even fighting with their parents, getting into things like stealing and all sorts of wrong activities. And these were small children right from the age of, let's say, 7, 8 to about 15, 16 or so. So we thought we should do something for them. And then we established a knowledge center from this organization of ours, Earthcare Foundation. We formulated a project which we called Project UDAAN 1.0. Under this project, our main agenda was to call these children to the knowledge center every day after school at about 3 o'clock for about 4 hours, upgrade their knowledge of the subjects which they were studying, whichever class 4th to class 12th, we used to upgrade their knowledge. But the main sort of, thrust was character building for them, trying to make them good future citizens, law-abiding citizens of tomorrow. And in that, we used to do a lot of activities for them. We used to take them to different governmental institutions, like, let's say, the post office or the police station or to the metro, to show them, how things work and what are these organizations and what are they for, and you should respect them, you should use them properly as per law. These are the things which we used to tell them. And we found that the transformation was phenomenal. Not only, their subject knowledge improved drastically, and the will to do something good in life, which was the most important driving factor, which is the most important factor in anybody's life, that started, developing in them. For example, एक छोटा सा बच्चा जो उस समय 6ठी क्लास में पढ़ता था, 6ठी या 7वीं में था शायद, मैं आपको ये 2010-11 की बात बता रहा हूँ. वो जब आया था तो मैंने जब उससे पूछा कि तुम 6ठी 7वीं पढ़ते हो, क्या बनना चाहोगे, कुछ सोचा है? तो पहले तो उसने कुछ नहीं कहा. उसके बाद धीरे धीरे बड़े शर्माते उसने कहा कि मेरे पिताजी इज अ शू मेकर, एक कॉबलर हैं, तो मैं भी शू मेकिंग का ही काम कर लूंगा. वो सड़क के किनारे बैठ के काम करते हैं, उसी से कमाते हैं और हम लोग का खर्च चलता है. मैं भी उसी हिसाब से कमाऊंगा और घर का खर्च चलाऊंगा. That was the response I got from that child when he was hardly 7 to 10 days old in our knowledge center.
same child, when I asked him about 6 months later, you know what he said? He said, मैं आपके ऐसा IAS officer बनना चाहता हूँ. And imagine the change in the thinking of that child, the confidence which was coming in him. मैं आपके ऐसा IAS officer बनना चाहता हूँ. With full confidence in him, he said, not wavering, not faltering, with full confidence, with a straight face, he told me, मैं आपके ऐसा IAS officer बनना चाहता हूँ. एक छोटी सी बच्ची जो ट्राइबल एरिया से आई थी, झारखंड से, कभी स्कूल नहीं गई, हालांकि उसकी उम्र 12-13 साल की हो गई थी. उस लड़की में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उस बच्ची में, 7-8 महीने पढ़ने के बाद ही वो क्लास 3rd और 4th के मैथ्स और इंग्लिश के साथ सब कुछ बहुत आराम से कर लेती थी. एंड यू नो the characteristics or the qualities of cooperation with each other, which we used to tell them through different games and all that, these started developing in them. They stopped fighting with their neighbors or fighting amongst themselves. They stopped using bad language. And the way we used to teach them, to respect everybody, they started doing all that. और एक बड़े मजे की बात बताऊं आप सबको कि एक बार हमने इन लोगों को सिखाना शुरू किया कि तुम अपने पिता माता जी की इज्जत करो, और सुबह जब उठते हो सो करके सबसे पहले उन्हें माता पिता जी के पांव छू के उनको प्रणाम करो. When you get up in the morning, touch your parents' feet and take their blessings before you do anything else. बच्चों ने ये करना शुरू किया, and their parents were so pleasantly surprised, if not shocked. They started coming and telling us कि ये सर आपने क्या कर दिया इन बच्चों को. पहले तो मुझसे झगड़ा करता था, सीधे मुंह बात नहीं करता था, हमें भी गालियां देता था, आज हमारे पैर छूता है. So what I'm trying to tell you is the transformation in those children was phenomenal. On the study front, knowledge front, character front, and on the front of becoming good law-abiding citizens of the future. This was a great learning. We impacted about 3,042 children in about 8 years' time till COVID came. And those children are now are so empowered and so good in their life. Everybody is doing something of his own. किसी की वो अपनी एजेंसी है, किसी बिजनेस की, किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है. They have established themselves. So that gives us a lot of happiness. At the same time, that gave us a lot of learning also. And we realized that every child, has the potential, and merit is not beholden to, either money or status in life. Any child of any part of the society, if guided properly, and if empowered properly, if mentored properly, can reach the same height which a well-off person can reach. That was our project UDAAN2 of Healthcare Foundation. We had stopped when the COVID came, but now we have restarted that again. Mainly on the demand of those migrant labor societies, their people have been coming and demanding. So we have started that again. But during this COVID period, when there was nothing to do, then all our team members were really getting restless. कि भाई कुछ करना चाहिए. सबों के दिमाग में बात थी कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए हम लोगों को सूझ नहीं रहा था. We were not able to, pin down one project or one area where we should start working. Ultimately, somehow, we got to realize that, there is a very large section of the society where you have very young people who have done their either 12th or their graduation, who stay in small villages and small towns of the country all over the nation, and who are now looking for small jobs here and there. Unfortunately, because these children, they are poor and they stay in small villages and small towns, so they can't afford going to outside their town or outside their district to study in good schools. So they never get a chance to, or access to quality education, as it is said. Number two, these guys, even though they have completed their 12th or their graduation, nobody tells them how to improve their personality traits. भाई अगर आप कहीं किसी से फॉर्मली मिलने जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, तो कैसे कपड़े पहन के जाना है, हाउ टू ड्रेस अप फॉर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, नोबडी टेल्स देम. सो ये बेचारे वो लाल पीले कपड़े पहन के चले जाते हैं इंटरव्यू में, एंड द इंटरव्यू बोर्ड चक्स देम आउट, दे थ्रो देम आउट. Similarly, their English language proficiency is very poor.
बिकॉज वो छोटे गांव में रहते हैं, छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे कॉलेज में पढ़ते हैं. So it's a huge handicap which they face with, and which I related to you just now. I narrated to you my, sort of trauma which I had faced in 1950s or 60s. Same trauma these young boys and girls who are even graduates, who are poor and who come from a small village and town, they face the same problem today because of the, lack of proficiency in English language. So that also pulls them back. That also, hinders in their selection in various jobs. और मुश्किल ये होती है कि ये जो बच्चे हैं छोटे गांव छोटे शहर में रहने के कारण इनका एक्सपोजर भी कुछ खास नहीं होता. So they don't know what are the new careers which have opened. Thousands of new careers, whether it is in the field of IT, whether it is the field of technology, whether it is in the field of, value addition, food processing, etc., etc. Thousands of new careers. Nobody tells them about these things. So as a result, they keep, बेचारे वो सरकारी नौकरी ढूंढते रहते हैं. कहीं छोटी सरकारी नौकरी पियोन की ही मिल जाए, किरानी की ही मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सरकारी नौकरी हो. और उनका ध्येय वही रहता है लाइफ में कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए. उसके लिए भी जहां भी वो कोशिश करते हैं, दे आर नॉट एबल टू गेट सिलेक्टेड. एंड जब गवर्नमेंट ने हर चीज के लिए कंपटीशन शुरू किए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने, स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने, यूपीएससी के एग्जामिनेशन जब होने लगे, तो ये इन बच्चों ने से कुछ ने उसमें भी ट्राई किया. दे थॉट कि हम भी ट्राई कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि इनके पास पैसा नहीं होता कोचिंग करने के लिए, इनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती, तो वहां पे भी ये फिर दे आर लेफ्ट बिहाइंड, उनका सिलेक्शन नहीं होता. एंड अल्टीमेटली दीज यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर लेफ्ट टू फेंड देयर, फेंड विथ ओनली स्मॉल जॉब्स हियर एंड देयर, जो अपने छोटे से गांव के बाहर या तहसील के टाउन में या छोटे से टाउन में जो थोड़ी बहुत नौकरी कहीं मिली, किसी दुकान पे नौकरी कर ली, किसी के वर्कशॉप में नौकरी कर ली, इस तरह की नौकरी करके वो जिंदगी बिताते हैं. So, they are doomed to face abject poverty, they and their families both, for their whole life. And when we started studying this problem, we were really shocked to find that the population of such people is very, very huge. For example, if I tell you in a brief manner, as it is said, our country is a very young country. It has about 35% of population is young population. So if you take 140, 150 crores as our population today, nearly 50 crores is young population, right? Now, if we link this 50 crores with the poverty line index of 19-20% now, 20% of this 50 crore young population of India is below the poverty line. These are the people who stay in small villages, small towns here and there. And these are the 10 crore number of young boys and girls all over the country who are not able to do anything in life. That is a big problem. The result is, of course, they themselves, their families, as I said, they face abject poverty for their whole life. They have to, be content with जो छोटी मोटी जॉब कहीं मिल जाए, 2-4 हज़ार रुपए कमा के किसी तरह जिंदगी चला लें, ये करते रहते हैं. लेकिन इसका दूसरा बड़ा रेमिफिकेशन अगर आप देखिए, दूसरा इम्पैक्ट जो बहुत बड़ा है, कि ऐसे 10 करोड़ नौजवान, और एक एक नौजवान अगर आप ठीक से गाइड करें तो नौजवान दुनिया बदल देने की ताकत रखते हैं. ये 10 करोड़ नौजवान देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो जिंदगी की जद्दोजहद है, जिंदगी की लड़ाई है, सर्वाइव करने की लड़ाई है, वो दिन रात चलती रहती है. सो दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट टू द development of the nation as such, which is a huge loss to the national development as well. So we thought, we decided that yes, COVID के time में discussion होता रहा, so we decided that yes, this is the sector we should focus on, we should do something for them. Then the question came, how do we do it? First we thought, in our own I'll call it over-enthusiasm in hindsight. In our own over-enthusiasm, we thought, okay, we'll go to some states, we'll adopt some schools and villages, and we'll start working with on such young boys and girls who are deprived, who are poor, who are underprivileged, and we will empower them. हम जाके वहाँ काम करेंगे, गांव में करेंगे. बट जब ड्राइंग बोर्ड पे हम लोगों ने उसका पूरा प्रोजेक्टाइजेशन शुरू किया, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाज गेटिंग प्रिपेयर्ड, then we found 3 things. One, that
such a thing would be highly capital intensive. It will require a lot of money to be spent. Number two, it will require a lot of traveling by the team, which may not be possible. And number three, if you want to escalate or replicate such things in future, it will be a very, very long journey and very difficult. अगर आप एक गांव या 5 गांव के 5 स्कूल या 5 गांव अडॉप्ट कर लें और 500 बच्चों को फायदा पहुंचाएं, तो उस 500 बच्चों से आपको 5000 पहुंचने में 20 साल लग जाएंगे. By that time, luckily, the online teaching and online learning concept had come during the COVID period. We thought that's a good medium we can adopt. And then we started working on this online courses for them. We thought that, these children, these young boys and girls are such that they don't have money. So they can't spend money on traveling every day to go and attend a class to some place in the town, or they can't spend money to go and stay in somewhere in the town to do some classes, attend some classes, or they can't spend money to pay for the classes. So we thought, let us try to take knowledge to their doorsteps through online method, so that they don't have to travel and incur any expenses. They don't have to go and stay in any town and on for which they will need extra money, and they can study anywhere, anytime. Now, this concept of anywhere, anytime also came up once we formulated our project. Then we thought we will give them 4 courses. One is that English language proficiency online. Second was personality development and soft skills online. Third was recruitment examination coaching of different recruitment examinations online. And fourth was career counseling. So we talked to some people, like I talked to some people in my village, and our members, basically talked to their villages, like Udaji was mentioning, that was his village and all that. So we got some sort of a clarity that yes, what we are thinking is maybe on the right lines. But, at that stage, the project hypothesis had to be got validated properly. So we thought we should get it validated through a proper survey. Then we conducted survey in 10 states of the country, because since the beginning we were very clear that this problem exists with the young boys and girls of the whole country, wherever they are, whichever state they stay in. Some places, in some states, it is a little less, some states a little more, but it has the same problem everywhere with these poor and underprivileged young boys and girls. So we conducted surveys in 10 states, in which 1,091 such poor young boys and girls responded. And I felt very happy when so much of response came. And they said one thing, that yes, we have these problems. So the courses which you are suggesting is very good. Although in career counseling, because maybe those people of that age did not have that foresight, so they didn't mention career counseling very much. But they said, yes, English language proficiency and personality development and soft skills and recruitment examination coaching, they said, would be very important for us. So you can give us these courses online, then it will be very good for us. During that project hypothesis survey, validation survey, we got one more learning. हम लोगों ने पहले सोचा था कि we will do the courses online in a fixed time every day. कि भाई कोर्सेज सुबह में 10 बजे से शाम के 5 बजे तक होंगे, समथिंग लाइक दैट वी वर थिंकिंग. जो पुरानी बात दिमाग में थी ना कि भाई क्लास और स्कूल में कॉलेज में कोर्सेज ऐसे चलते हैं, तो वी थॉट ऑनलाइन भी ऐसे फिक्स टाइम पे करेंगे. बट दीज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द सर्वे सेड कि साहब ये ऑनलाइन हम तो अच्छी तरह पढ़ेंगे, लेकिन हम फिक्स टाइम पे नहीं पढ़ पाएंगे. देन वी वर लिटिल सरप्राइज्ड व्हाई. देन दे टोल्ड अस that, sir, till the time we get a proper job, we do some job here and there nearby. जैसा मैंने कहा ना, कोई किसी दुकान में काम करता है, कोई किसी वर्कशॉप में काम करता है, कोई कहीं कुछ और करता है. उन्होंने कहा कि हम कुछ ना कुछ करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, परिवार की मदद करने के लिए. हम 2-4 हज़ार रुपये कमाते हैं इससे. अगर आप ये सोचेंगे कि हम वो कमाई और काम अपना छोड़ के दिन में हम क्लास करें आपका, तो हमारी जीविका का सवाल है, इसलिए हम वो नहीं कर पाएंगे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेड द सेम थिंग. देन इट ब्रॉट इन अ न्यू डायमेंशन कि भाई फिक्स टाइम पे तो ये बच्चे क्लास नहीं कर पाएंगे. देन वी ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट, वी टॉक टू आवर टेक्नोलॉजी पार्टनर्स एंड टेक टीम्स, एंड वी ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ
flexi time and flexi location courses. Means the courses will be happening online at fixed time, as well as the recordings will be available to them anytime, anywhere. Means the child, चाहे वो अपने खेत में बैठा हो, अपने खलिहान में बैठा हो, अपनी दुकान में बैठा हो, कहीं बैठा हो, रात का समय हो, दिन का समय हो, कभी भी वो पढ़ सकता है. उस सेम मॉड्यूल होगा, रिकॉर्डेड उसको अवेलेबल हो जाएगा. तो एक ये हम लोगों ने उस जो प्रोजेक्ट हाइपोथेसिस का वैलिडेशन हुआ, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, which further enriched our project. Excuse me. And then the next question was how to reach these young boys and girls who were all over the country in remote villages, small towns, how to reach them. So a lot of suggestions came. Ultimately, it struck us that the Government of India, Ministry of Information Technology, उसने करीब 25 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था हर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर बनाने का. पहले गवर्नमेंट ने इसको अपने खर्चे पे शुरू किया था, बाद में इसको गवर्नमेंट ने पीपीपी मोड में डाला, और अब ये टोटली प्राइवेट एंटरप्राइज होता है. तो पूरे देश के 6 लाख गांव में इस तरह के 5-5.5 लाख सेंटर्स चलते हैं. Then I got in touch with the Secretary of the Ministry of Information Technology, and they were very happy to support us. They said, yes, we have a huge network of common service centers, 6 lakhs of them all over the country. वो हर छोटे गांव में है, हर छोटे शहर में है, तहसील में है, ब्लॉक हेडक्वार्टर में है, बड़े टाउन में, हर जगह है. आप कहीं भी खोजेंगे वो मिल जाएगा. So they were so nice that they said, yes, we will partner with you guys, and because आप ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, so we will give you our whole channel, you know, to support your project. Then we had a tie-up, and we signed an agreement with them. And then, you know, through this huge network of 6 lakh common service centers, now today we have a reach across the country to every remotest village of the country. Every remote small town, whether it is class C, class D, class A, class B, all towns all over the country, we have the access. And that could take all this project to, you know, all parts of the country as such. So that became another great value addition to the project and a USP for our project, as you can call it. Then, you know, the question of developing the tech platform, online platform came up, and developing the courses came up. Again, initial thought was, as you know, people think that हमको हर चीज खुद करनी चाहिए, अपना बनाना चाहिए. तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ये जो टेक प्लेटफॉर्म होगा ऑनलाइन लर्निंग का, वो भी हम अपना बनाएं. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अपना बनाएंगे, फ्रेश कोर्सेज भी हम खुद डेवलप करेंगे. बट अगेन when we went to working in detail about it, we found it's again very capital intensive and it was highly time taking. वो आपको 2 साल लगेंगे सारा डेवलप करके और कोर्सेज और LMS प्लेटफॉर्म उस पर लाने में. But then we thought, why not, when such services are available in the market from good service providers, why reinvent the wheel? वही काम हम दोबारा क्यों करने जाएं? Then we started, you know, identifying people who have this learning management system, LMS platforms, who provide courses online. And then we identified the best learning management system provider, which is Know Thy Choice. They have an LMS system which they have brought in. And we went to the best course provider in the country, that is Physics Wala, for all our recruitment examination coaching courses. We got them, we saw the ratings of everybody, and we saw them the best and most popular. So we brought them in. We brought Nguru is an agency which runs English language proficiency courses and does the certification also. So we brought them in for English language proficiency. And Know Thy Choice will be is doing the career counseling part and personality development and soft skills part. So, you know, we brought all these partners on one platform so that, you know, we can do all this in a smooth manner. We can reach out to the remotest corner of the country, and we can give the best quality courses to these young boys and girls who are poor, who could never imagine they will get such courses, access to such courses. We'll give them all these courses, the best courses of the country. And that is how we brought it to this stage. And, you know, when we thought of launching it, then we started sort of assessing which are the states which should launch. There were
demands from, 23 states from all over the country that we should launch in all those states. But as you could appreciate, because of NGOs, limitations of resources and all, we initially thought we will launch it in 9 to 10 states. And then we, started getting support from the industry and funding agencies also. And we got good funding from, AU Small Finance Bank of Rajasthan, excuse me, and Coal India Limited for about 1,000 students each. And that is why we launched this course on 16th of October from the state of Rajasthan first, last month. And we were very happily surprised, I must share with all of you, that we got very good response. Within 8 to 9 days, we got a registration worth about 200 students out of a target of 800 for Rajasthan. So now tomorrow, we are rolling it out in 8 other states also, namely Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Orissa, then Assam, then Madhya Pradesh and Chhattisgarh. So these are the 9 states we'll be covering for next 1 or 2 months. We are in discussion with various other funding agencies also, and we are very hopeful that we get bulk funding from 4 to 5 more agencies. And as and when it keeps coming, we'll keep it expanding to other states as well. Because, for running these courses, you really need funds. So, and this one important part which I want to mention here when the question of funds has come is that we deliberately decided that we will not give this course to anybody free of cost. Because, somehow in life, one has learned, and all of you, I think, would agree, all of you are learned people, you have seen life, that if you give somebody something totally free, that person doesn't value it very much. तो हम अगर बच्चे को बिल्कुल फ्री दे देंगे तो वो पढ़े लिखेगा नहीं, अपना भी टाइम बर्बाद करेगा, हमारा आपका सबका टाइम बर्बाद करेगा, सबकी मेहनत बर्बाद करेगा, साथ साथ दूसरा जो कोई सीरियस बच्चा पढ़ने वाला होगा उसकी वो सीट भी एंगेज करके रखेगा. तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम फ्री नहीं देंगे, बट वी विल चार्ज ए वेरी टोकन अमाउंट ऑफ नियरली 10% ऑफ द कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट ऑफ द कोर्स, विच वी हैव टू पे टू द कोर्स प्रोवाइडर. जैसे अगर हमें कोई कोर्स का अगर कॉस्ट हमें लगता है 5,000 रुपये, तो हम बच्चे से सिर्फ 400 से 500 रुपये लेंगे. वो भी इसलिए कि अगर वो पैसे देगा तो सीरियस होगा पढ़ने में, उसका पैसा लगा हो, उसके पिताजी का पैसा लगा हो, देन ही विल थिंक अबाउट इट एंड स्टडी सीरियसली, एंड तब लाइफ में कुछ कर पाएगा. और बाकी जो उसको कोर्स प्रोवाइडर को जो पेमेंट करना होगा 4,500, वो जो हम ये CSR फंडिंग, इंडिविजुअल फंडिंग हम लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं, और आप सच कहिए तो हम भिक्षाटन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर चारों तरफ, तो उससे हम इकट्ठा करेंगे. और मुझे बड़ी खुशी है आपसे शेयर करती है कि रेस्पॉन्स हैज बीन वेरी गुड. लॉट ऑफ इंडिविजुअल डोनर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री whom we have not known ever, they are sponsoring. कोई एक बच्चे को स्पॉन्सर करता है, कोई 2 बच्चे को स्पॉन्सर करता है. और एज आपने देखा होगा वेबसाइट पे कि एक बच्चे को स्पॉन्सर करने का खर्च करीब 6,000 रुपये आता है. तो एक तो इंडिविजुअल डोनर्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है. और हम लोगों ने अपनी ECF टीम में ये डिस्कस किया था कि जो इंडिविजुअल डोनर्स होंगे वही हमारे मेन स्ट्रेंथ होंगे, क्योंकि दैट बेस इज गोइंग टू बी वेरी बिग, एंड अल्टीमेटली देयर गुड विशेस विल बी व्हाट विल बी टेकिंग अस फॉरवर्ड. और साथ साथ क्योंकि बड़े पैमाने पर हम करना चाहते हैं तो बल्क फंड की जरूरत पड़ेगी. सो वी आर गोइंग टू द CSR फंडिंग एजेंसी, और जिसमें कि 2 में मैंने बताया जैसा आपको, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कोल इंडिया लिमिटेड से हमें फंड्स मिल गए हैं, और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं करीब 2,000 बच्चों को केटर करने के लिए. इसलिए इसमें हम लोगों ने जब ये देखा कि भाई हमने जो बच्चों को जितना सीरियस हम बना सकते हैं, उनसे ये कहते कि भाई तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, थोड़ा सीरियस हो जाओ, पढ़ाई करो, जिंदगी बनाओ, वो तो करेगा. लेकिन साथ साथ हम लोगों को लगा, अपने ज़माने की बातें मुझे याद आई कि भाई जब मेरे जीवन में 2 हमारे टीचर्स ने मेंटरिंग करके मेरी ज़िंदगी बदल दी, तो शायद ऐसे बच्चों की ज़िंदगी बदलने में मेंटर्स का बहुत बड़ा हाथ होगा. और उसीलिए हम लोगों ने आप सभी महानुभावों से, आप सभी लोगों से, ऑल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जितने भी आप समाज के
प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, गरीबों को मदद करने के बारे में सोचते हैं, आप लोगों से हम लोगों ने वाइड स्केल पर अनुरोध किया कि भाई आप मेंटर बनिए। और मेंटर बन के आपका सिर्फ काम यह होगा कि जो बच्चे आपके साथ टैग्ड होंगे, अटैच्ड होंगे, और हर मेंटर के साथ 10 बच्चे अटैच्ड होंगे जैसा आपको पता है, तो उन बच्चों से हफ्ते में एक बार बात कीजिए। आपको हफ्ते में 1 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे 5-10 मिनट बात कीजिए हर बच्चे से। ज़रा उसको जैसा कहते हैं कि भाई थोड़ा सा उसकी बातें सुन लेना, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर देना, उसकी समस्याएं सुन लेना, थोड़ा गाइड कर देना, तो बच्चे को लगता है कि हमें भी देखने वाला कोई है, मेरी केयर लेने वाला कोई है, मुझे गाइड करने वाला कोई है, तो उसमें हिम्मत बढ़ती है, तब वो तेजी से आगे बढ़ता है, मेहनत करता है। इसलिए मेरे विचार से इसमें आप सभी मेंटर्स का रोल बहुत बड़ा होगा, और मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बच्चे को ऑनलाइन कोर्स दे देना, रजिस्टर कर लेना, उसको कोर्स के सारे जिसको कहते हैं ना लॉगिन आईडी और एक्सेस दे देना अलग बात है, दैट्स ए वेरी टेक्निकल सॉर्ट ऑफ ए मैकेनिकल वर्क। लेकिन एक्चुअली जो उसकी बुद्धि में जो बात भरेगी, जो उसकी बुद्धि को बुद्धि में यह बात बिठाएगा कि भाई जिंदगी का तुम्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है कि फिजिक्स वाला के कोर्सेज जिसके लिए 10-10, 15-15 हज़ार लोगों को खर्च करने पड़ते हैं, तुम्हें ये 200, 300, 400 रुपये में मिल रहे हैं, तो तुम उसका अच्छे से उसका उपयोग करो, मेहनत करके पढ़ाई करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। तो ये बात उसके दिमाग में आप मेंटर्स ही भर सकते हैं, और उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हफ्ते में 10 मिनट उनसे बात कीजिए, उनके परिवार का हालचाल थोड़ा सा एक उनसे जो कहूँगा पर्सनल रिलेशनशिप थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। उसको लगना चाहिए कि आप उसके अपने हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के हों। अगर आप नौजवान हैं तो उसको लगना चाहिए कि मेरा कोई बड़ा भाई मुझे मिल गया। अगर आप हमारी उम्र के हैं तो उनको लगना चाहिए कि मुझे मुझे बड़े अंकल या मेरे दादाजी मुझे मिल गए, समथिंग लाइक दैट। और इससे होगा ये कि उस बच्चे को आगे बढ़ने में जो होता है ना कि बच्चा कभी कभी हिम्मत हार जाता हो इतना। अब जैसे अंग्रेजी के कोर्सेज में कुछ बच्चों की फीडबैक आ रही है कि सब अंग्रेजी में बोलते हैं तो हमको दिक्कत हो रही है, तो हम लोग उनको बार बार अभी ये कह रहे हैं कि बेटा तुम प्रयास जारी रखो, और हम उसको थोड़ी छोटी टिप्स दे देते हैं। जैसे तुम अंग्रेजी की न्यूज़ आती है तो उसको सुना करो कहीं जाके बैठ के, या अंग्रेजी का अखबार कहीं से मिल जाए तो जो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की कोशिश करो। स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन लाइफ जो हम लोगों को भी हमारे शायद माता पिता ने सिखाया था अपने ज़माने में कि अंग्रेजी बोलना कैसे सीखना है। तो ये छोटी छोटी ये बताने से ना वो बच्चा लॉस्ट फील नहीं करेगा, और वो बीच में छोड़ के चुपचाप डिप्रेस होकर बैठ नहीं जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा बड़ा रोल इस पूरी योजना को सफल बनाने के लिए, और इसकी सफलता तभी होगी जबकि इसमें जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, उसमें से 70-80% बच्चे सीरियसली पढ़ें और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीरियसली दें, उसमें उनकी सिलेक्शन हो और वो जिंदगी में कुछ कर सके, तभी हमारी सफलता होगी उसमें। अदरवाइज ये सारा प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार होगा। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा आप सबों ने, चूंकि आप सब ने मेंटरशिप में रजिस्टर किया है, इसी से हम लोगों को विश्वास हो गया है कि आप सब समाज के लिए, इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पर्सनल टच दीजिए। और एक बात और हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने रिसर्च किया था, कि इस तरह के ऑनलाइन लर्निंग में ड्रॉप आउट बहुत होते हैं। जैसा मैंने बताया ना कि बच्चे को ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो वो उसने छोड़ दिया कि नहीं हो सकता हमसे। तो वहां पे मेंटर उनका नहीं था बताने वाला कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा इसको देखो क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा हम तुमको गाइड करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते रहो, कोई बताने वाला नहीं था। तो काफी बड़े संख्या में ड्रॉप आउट्स होते हैं ऑनलाइन कोर्सेज में। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ऑनलाइन कोर्सेज के फेलियर का, कारण ये बनता है बार बार ड्रॉप आउट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उस ड्रॉप आउट को टैकल करने के लिए हम लोगों ने 3 तरीके रखे हैं। पहला तो जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन है ना, उसमें जो डैशबोर्ड होगा उसमें हमें हर बच्चे का दिखेगा कि वो किस कोर्स के लिए। मान लीजिए राम कुमार ने ही हैज टेकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, एंड व्हेनेवर राम कुमार विल लॉग इन टू स्टडी फॉर द कोर्स, वो हमें डैशबोर्ड पे दिखेगा, मॉनिटरिंग जो हमारा सेल है उसको। अगर द मॉनिटरिंग सेल फाइंड्स, द एलएम्स का जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का मॉनिटरिंग सेल है, वो इफ दे फाइंड दैट राम कुमार इज नॉट लॉगिंग इन फॉर द लास्ट 2 days, then immediately a message is sent to Ram Kumar that, dear Ram Kumar, you have not been logging in for the last 2 days. You are missing on important courses. Please log in and study regularly. अगर
if it is seen on the same dashboard that Ramkumar is again not logging for next 3-4 days also, third day and fourth day, again a notification will go to Ramkumar कि भाई अब 4 दिन से लॉग इन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई करो, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो रही है वगैरह वगैरह, मोटिवेशनल सॉर्ट ऑफ 2-3 लाइनर. अगर आफ्टर दैट ऑल्सो इट इज फाउंड कि 5th-6th डे भी वो Ramkumar is not logging in, then a notification goes to the mentor of the student as well as to the common service center जहाँ से स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था. तो नॉर्मली चूंकि कॉमन सर्विस सेंटर जो गांव का है वहां से अगर स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो उस कॉमन सर्विस सेंटर का जो आदमी है वो गांव के हर बच्चे को जानता है, वही उसी ने उसको लाकर रजिस्ट्रेशन कराया था. तो उसको भी हम कहते हैं कि जरा उस बच्चे से कांटेक्ट करो कि पिछले 6 दिन से क्यों नहीं लॉग इन कर रहा है, उसको पढ़ना चाहिए, लॉग इन करना चाहिए. और मेंटर से भी अनुरोध करते हैं, उनको जो नोटिफिकेशन जाती है कि आपका ये स्टूडेंट जो है मेंटी Ramkumar, which he is not logging in for the last 6 days, then the mentor, during his weekly discussion, he will call him up and say, "Bhai, Ramkumar, what is the problem? Why are you not studying?" So these are the 2-3, safeguards, I should say, safeguards we have taken up for reducing the dropout numbers. I mean, as you know, nothing is perfect in the world, so we may not be 100% dropout को खत्म कर देंगे, ये हम आज claim नहीं कर सकते. But sincere efforts are that with the help of mentors, with the help of the village level common service center, हम dropout के संख्या में काफी कमी ला सकेंगे. That is what is our effort. So और जो बच्चा जैसे जैसे कोर्स करता जाएगा, naturally for English language he will get a certificate. जिस लेवल का कोर्स वो करेगा, intermediate या advanced जो भी होगा, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. एंड जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के कोर्सेज खत्म करेगा, देन ही विल अपीयर इन द कंसर्न्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एंड होपफुली देन ही शुड डू बेटर एंड ही शुड गेट अ गुड जॉब. दैट इज व्हाट इज द होल आइडिया. और मैं समझता हूँ कि हम लोगों का जो लक्ष्य है अभी आप सबों के साथ शेयर करना मैं चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है. हम लोगों ने ये सोचा है कि हम अगले मार्च तक इससे इस तरह से 10,000 इस तरह के गरीब बच्चों को हम मदद करेंगे. और अभी जो कहने हैं जंग जारी है कि हम इस 10,000 बच्चों को मदद करने के लिए पैसे इकट्ठा करें, डोनर्स इकट्ठा करें और उनके लिए मेंटर्स भी लाएं ऑन बोर्ड, जिससे कि हम उनको 10,000 बच्चों को सचमुच उनकी ज़िंदगी बदलने का प्रयास कर सकें. कितनी ज़िंदगी बदलेगी वो तो एक साइकिल जो प्रोजेक्ट पूरा होगा उसकी इवैल्यूएशन होगी तो पता चलेगा. लेकिन एक अंदर में दिल में विश्वास है हमारे कि हम जिस तरीके से इस काम को हम लोगों ने प्रॉपरली रिसर्च करके प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट हाइपोथेसिस की ठीक से सर्वे करके जो उसका स्टेक होल्डर है मेन स्टूडेंट, उससे हमने बात करके उससे फीडबैक लिया, उससे प्रोजेक्ट को इम्प्रूव किया. जिस तरह से हमने इसकी सारी डिलीवरी सिस्टम बनाई है, जिस तरह से हमने इसको ड्रॉप आउट जैसे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम लोगों ने जो सिस्टम बनाए हैं, तो ये सब जो हम लोगों ने किए हैं, तो इसलिए विश्वास मन में ये ज़रूर है कि ये हम सफल ज़रूर होंगे और हम 10,000 बच्चों तक ज़रूर पहुंचेंगे. और मेरे ख्याल से आप सबों का सहयोग रहेगा, हम सब कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, then I'm sure we'll be able to change the life of thousands and thousands of such children in the future times to come. So that is what I wanted to share with all of you, just to brief you about the organization, the project, so that you are comfortable with it. When you are talking to your student, you should be comfortable with what you are doing, with whom you are doing and why you are doing it. एंड एक बार जब आप खुद कंफर्टेबल होंगे तब आप अच्छी तरह से स्टूडेंट को भी गाइड कर सकेंगे, उसको भी कंफर्टेबल कर सकेंगे. तो आइडिया यही है कि आई मीन यू आर द मेन सॉर्ट ऑफ आई वुड से प्लेयर, यू आर द सेंटर फॉरवर्ड, ऑल ऑफ यू आर द सेंटर फॉरवर्ड ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट. सारा गोल करना है, आपको करना है. So please give your best. I know all of you will give your best, and that's why all of you have opted for it. And also request your near and dear ones. जो भी, for example, if I can mention housewives, हर आदमी के घर में पढ़ी लिखी हाउसवाइफ हैं आजकल, तो उनसे रिक्वेस्ट करिए, वो इस काम को करेंगे तो शायद महिलाएं बच्चों को और अच्छा गाइड कर सकती हैं, उनसे उनकी बॉन्डिंग और अच्छी हो सकती है. तो हाउसवाइफ्स हों, पढ़े लिखे लोग हों, रिटायर्ड लोग हों, वर्किंग लोग, एनीबडी इन योर फैमिली हु कैन गाइड सच स्टूडेंट्स एंड शुड कम फॉरवर्ड. उनको भी मोटिवेट करें आप, उनको भी जोड़ें इससे. और मैं तो समझता हूँ ना, देखिए अगर देश का हर आदमी एक एक इस तरह के गरीब बच्चे को मदद करे तो शायद अगले 10 सालों में हमें इस तरह के गरीब बच्चे हमारे देश में नहीं मिलेंगे. शायद देश के हर आदमी को एक एक बच्चे को अगर मदद करने की बात हो जाए, तो हम यहाँ उससे बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं. इसलिए
मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आप सबों के साथ we will really be able to achieve our goal, and we will really be able to empower these, poor and underprivileged young boys and girls of the country to rise and shine in life. That is what I normally say, that we should enable them, we should empower them to rise and shine in life, which they have been missing all together. So that's what I wanted to say. Thank you very much to each one of you. If any of you wants to say something, you are most welcome. Please raise your hand, and then once your name is called out, then please unmute yourself and then speak. Over to the whole floor. Please, Yashi, बताइए. Please unmute yourself. कुमार साहब, पहले तो इट वाज वेरी नाइस हियरिंग यू. आपने जो बातें कही बहुत ही सही बातें कही, एंड इट अपील टू अस. दैट इज व्हाई आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव जॉइंड. अब सिर्फ जानना चाहते हैं आपसे 2-3 चीज. नंबर 1 ये कि जैसे हमने ऑप्ट किया है अभी रिसेंटली ही टू बी अ मेंटर, तो फिर वो कब से मेरा कोई रोल शुरू होगा? दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग आई वांट टू नो इज कि आपने जैसे कहा कि वी मस्ट स्टे इन रेगुलर टच विद द मेंटीज, जो 10 बच्चे हमारे साथ लिंक होंगे. तो बेस्ड ऑन व्हाट दे टेल मी, एक फीडबैक का सिस्टम भी आपके यहाँ शायद होगा ही, टू मे बी कोर्स को भी ट्रिम करने की जरूरत पड़ सकती है अगर बहुत सारे बच्चे एक ही तरह का फीडबैक दें. करेक्ट. तीसरा चीज आई वांटेड टू नो वाज कि आपने कहा टू टॉक टू योर नेबर्स और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हु कैन आल्सो बिकम मेंटीज. तो मान लीजिए समवन इज विलिंग, तो उसको फिर कैसे ऑनबोर्डिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं to make them also, like हमको तो शरण साहब ने, because he is a senior mentee, he is someone in your organization, but हम तो किसी को कैसे करेंगे ये बता दीजिए. And I must say, Yashi, that Sharan Saab is a firebrand senior mentor of our Healthcare Foundation. Very active and very firebrand. So a very important issue. I think, I'm sorry I missed these points. We will be starting next week because the courses are getting activated for the students, और बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है. इसलिए हम नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे. हम बच्चे अलॉट करके आपको भेज देंगे. और चूंकि जैसे अभी हम लोगों ने राजस्थान में जब लॉन्च किया ना, तभी हमारे पास करीब 220-230 बच्चों ने जो वहाँ एनरोल किया है, और कल से हम दूसरे 8 राज्यों में भी शुरू कर रहे हैं. तो मान लीजिए जो भी 300-400 बच्चे आएंगे, तो हम हर मेंटर को अभी बराबर देंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि कुछ मेंटर को हम 10-10 बच्चे दे दें, किसी को एक बच्चे भी ना मिले और वो बेचारे ऐसा फील करे कि मुझे छोड़ दिया गया. इसलिए सब हम शुरू करेंगे बाय रोटेशन, कि सबको पहले 1-1 दे दिया, 2-2 दे दिया, ऐसे करके जितने ही बच्चे हैं समूह में बांट देंगे. तो नेक्स्ट वीक दिस सिस्टम विल स्टार्ट. अनदर पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट फ्रॉम यू वाज फीडबैक का सिस्टम लोगों ने डेवलप कर लिया है. इट विल बी थ्रू अ गूगल डॉक फॉर्म विच विल बी शेयर्ड. उसका लिंक आपसे शेयर कर देंगे. एंड इट बी अ वेरी ब्रीफ फॉर्म, जिसमें कि हर चीज़ की कोडिंग कर दी गई है. जिसमें राम कुमार का अगर आपने देखेंगे कि आपने बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है, तो यू गिव हिम 1 मार्क. 1 के नीचे आप टिक कर दीजिए. 1 to 5 का वो स्केल रहेगा, और उस पर आप सिर्फ टिक कर देंगे, जिससे विल बी एबल टू नो. और नीचे एक रहेगा, थोड़ी सी स्पेस रहेगी फॉर राइटिंग योर रिमार्क. इफ यू वांट टू से समथिंग और गिव सम फीडबैक व्हिच द चिल्ड्रन हैव गिवन, देन यू कैन मेक योर रिमार्क. और समय के साथ इफ यू any of you suggest कि फीडबैक में इस तरह से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो we'll be open to all that. Because you see, I want to share with all of you that this is not my project or Sharan Saab's project or Uday Jha's project or only Earthcare Foundation's project. It's all your project. So please feel free to give suggestions to improving it in any way you like. We'll be very happy to hear that. And third thing, जो मेंटर दूसरे लोगों को बनाने के लिए, तो आपको जो ये लिंक गया था, अगर आपके पास वो नहीं है, तो हम आपके ग्रुप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है मेंटर्स का, उस पर वो लिंक फिर से डाल देंगे, और राइटअप भी, जिससे कि वो राइटअप और लिंक आप जिसको भी चाहें शेयर कर दें. देन दैट पर्सन कैन क्लिक ऑन द लिंक, और वो छोटा सा फॉर्म है जैसा आपने भी भरा होगा, वो भर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी इजी थिंग. 1 second to click on the link, and then maybe 30-40 seconds to fill up the form. So that's all about it. द्विवेदी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज गो अहेड. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट कर लें. हाँ, धन्यवाद अजीत जी. एक्चुअली आपने जो बात कही वो सारी रिलेवेंट थी, और जो अभी यशी साहब ने जो कहा फीडबैक वाला, मैं उसी में थोड़ा ऐड करना चाहता था कि तो फीडबैक हो गया. दूसरा कि आपके सेंटर से कोई व्यक्ति उन बच्चों से फीडबैक के अलावा ये पूछे कि क्या उनको किसी और तरह की मेंटरिंग की जरूरत हो. तो उससे क्या होगा कि उसका वो एक सप्लीमेंट का काम भी करेगा.
बिल्कुल। मतलब मैंने कई जगह देखा है कॉलेजेस में कि 2 सेक्शन मान लीजिए हैं और एक बच्चा एक सेक्शन में पढ़ रहा है, पर अचानक उसको लगा कि उस सेक्शन में अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो वहाँ भी जाने को फ्री हो। ओके ओके ओके। तो ये या उसी का फीडबैक का ही पार्ट रहेगा, बट ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। या जो जैसे हमने अभी जो बात की यशी के कहने पर मेंटर्स फीडबैक की, उसी तरह स्टूडेंट फीडबैक का भी सिस्टम हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हम स्टूडेंट से हर स्टेज के बारे में पूछते हैं कि भाई तुम्हें रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तुम्हें जो कोर्स का लॉगिन आईडी मिलना था उसको समय पर मिल गया था कि नहीं मिल गया था, तुम्हें लॉगिन करने में कोई समस्या तो नहीं आई, तुम कैसा पढ़ रहे हो, पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हारी कोई सजेशन हो तो बताओ। तो ये फीडबैक सिस्टम कंटिन्यूसली चलता रहता है। और उसमें एक चीज़ हम लोगों ने ये रखी है कि इस फीडबैक में जैसे मान लीजिए आज 200 बच्चे हैं, कल 2000 बच्चे हो जाएंगे, तो जो ऑफिस में हमारे लोग बैठे हैं वो तो 2000 में से हर बच्चे को बात नहीं करेंगे, बट रैंडम सैम्पलिंग पे में भी एवरी सेकंड चाइल्ड एवरी थर्ड चाइल्ड से वो बात करेंगे। लेकिन देन इट बी एस्केलेटेड अप। हाँ, इट बी एस्केलेटेड अप। और जैसे फिर हमारे जो, क्योंकि अर्थकेयर फाउंडेशन का आपने देखा होगा वेबसाइट पे स्ट्रक्चर जो है वो 3 टियर है। टॉप पे सीनियर मेंटर्स हैं, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, वो दे आर कॉल्ड सीनियर मेंटर्स। और उसके बाद हैं स्ट्रेटेजिक टीम मेंबर्स हु आर यंग प्रोफेशनल्स, चाहे वो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट्स के हैं, बैंकों में वर्किंग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं। दे आर स्ट्रेटेजिक टीम मेंबर्स एंड दे आर द यंगस्टर्स हु एक्चुअली आर ड्राइविंग द होल प्रोजेक्ट। वो उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, हम लोग तो सिर्फ गाइड करते हैं उनको। और उसके नीचे हमारा ऑफिस की टीम है, और सबसे नीचे वी हैव स्टूडेंट वॉलंटियर्स और स्टूडेंट इंटर्न्स। तो हम उस फीडबैक का सिस्टम स्टूडेंट का है, उसको हम धीरे धीरे एस्केलेट करेंगे। जैसे ऑफिस ने अगर मान लीजिए 2000 में से 200 बच्चों से बात की, तो उन 200 बच्चे से 20 बच्चों से जो स्ट्रेटेजिक टीम मेंबर कोई बात करेगा, 20 मेंबर से कोई सीनियर मेंटर बात की, सो दैट हर लेवल पे थोड़ी सी असेसमेंट भी अलग होगी, क्योंकि हर लेवल की मेच्योरिटी अलग है, तो उसकी असेसमेंट अलग होगी। और उससे एक ज़्यादा हम कवर कर पाएंगे कि आफ्टर ऑल प्रोजेक्ट के डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेक्टर्स का क्या हाल चाल है, कहाँ क्या ठीक चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है, कहाँ क्या सुधार की जरूरत है, वो हम कर पाएंगे। यू आर वेरी राइट, दैट्स व्हाट विल बी फॉलोइंग। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ, थैंक यू। एनीबडी एल्स? या शरदिंदो, आप कुछ कहना चाहते हैं हाँ प्लीज? हाँ हाँ मैं आप ये अपना वीडियो ऑन करें तो और अच्छा लगेगा। या हाँ हाँ शरदिंदो, जी नाइस जी टू जी सी जी यू। जी 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 गुड इवनिंग। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि हम लोग मेंटर रेफर कर सकते हैं, तो क्या हम लोग जो है जो मेंटीज हैं जो बच्चे हैं उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं, या आपने ऑलरेडी मेरे ख्याल से एरिया आइडेंटिफाई किए होंगे कि जहाँ जहाँ आपको बच्चे रिक्रूट करने हैं, सेलेक्ट करने हैं? क्योंकि एक तो ये हाँ, था, और बस इसी से जुड़ा हुआ ये था कि जैसे कि आपने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं और जो सामान्य कक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी के लिए, तो जैसे कि अगर हम कुछ व्यवसाय भी जैसे सजेस्ट करना चाहें, जैसे उद्यमिता हो गई, यद्यपि बच्चों के लिए उद्यमिता जो है डायरेक्ट तो नहीं मानी जाती है, ठीक नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी उस तरह का रुझान जो है वो सब भी मतलब संभव है क्या, व्यवसाय और बच्चे सजेस्ट करना? शरदिंदो, आपने दो बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। बच्चे सजेस्ट करने के लिए चूंकि एक सिस्टम ये बना है ना कि जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर हैं, 6 लाख पूरे देश में, हर गांव में हैं, हर छोटे शहर में हैं, बड़े शहर में हैं, तो आपको जिस बच्चे को भी इसमें एनरोल आपको लगता है कि उस बच्चे को करना चाहिए, वो इसके लायक है, उसको जरूरत है, तो आप उस बच्चे को कहिए कि अपने नियरेस्ट सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर में जाओ, वहां एनरोल करो। दैट इज उससे उससे होगा नहीं है कि एक एक रुकता रहेगी और एक मशीनरी के थ्रू सारे एप्लीकेशन आएंगे, तो उनकी जो मॉनिटरिंग होगी आसान होगी, राइट। दूसरा, आपने जो मैं कहूँगा मेरे मुंह की बात छीन ली, हम लोगों ने उद्यमिता को भी अटैच इसमें ऐड करने का सोचा है, लेकिन थोड़े दिन बाद जरा सा पहला जो चरण है इस प्रोजेक्ट का भी, उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर जाने दीजिए अगले 4-6 महीने में। देन वील ब्रिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप, और उद्यमिता को भी हम इसमें लाएंगे अवश्य, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ठीक है। थैंक यू शरदिंदो। या विनय, कुछ कहना चाहते हैं? हाउ आर यू विनय? हाँ Unmute सर, yourself. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग Good सर। evening, and please put on your video. Let me see you. ओके, गुड इवनिंग सर। Very good evening. Vinay has been my student also when I was the Vice Chancellor of Niftam University. I was the founder Vice Chancellor for 5 years. So Vinay has been my student, and a very bright student, no doubt. At the same time, very conscientious citizen, always wanting to do something for the society. Proud of you, Vinay. Yeah, go ahead. ओके, थैंक यू सो मच।
सर ये आपका जो जैसे निफ्ट में भी आप हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि बच्चे को आप पढ़ाओ ये करो, वहां भी मैंने गेट और नेट की तैयारी देता रहता था। बहुत समय से आपके टच में मैं नहीं रहा, तो ऐसे ही प्रशांत के थ्रू पता चला कि सर अभी दिल्ली में ही है और काफी अच्छा एक इनिशिएटिव कर रहे हैं अपने सोसाइटी के लिए, तो हमने एज ए मेंटर मैं ज्वाइन किया है। मैं बहुत तो शुरू बढ़िया। से ही सर हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और खास करके सर गांव में क्या होता है कि बच्चे का एग्रीकल्चर के प्रति काफी ज्यादा झुकाव रहता है। और हमारे खास करके बिहार के जगह में अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे हमारे पास वोकेशनल कोर्सेस हैं, क्योंकि मैं तो सर या एग्रीकल्चर से पीएचडी किया हूँ। और मैं अभी सेंचुरी यूनिवर्सिटी से मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। गुड। तो मेरा मानना है कि खास करके जो बच्चे तैयारी करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर उसका झुकाव अगर एग्रीकल्चर एजुकेशन के प्रति हो, बहुत सारे ऐसे हमारे भारत में कॉलेजेस हैं जहाँ बच्चे को पता नहीं है। जब मैं सर मेडिकल तैयारी कर रहा था तो मेरे दिमाग में यही था कि सिर्फ मेडिकल करना है, मेडिकल करना है। मुझे 5 साल के बाद पता चला कोई भी एक आईसीएस संस्था है जहां पर बच्चे कम पैसे देखिए फेलोशिप मिलती है, यूजी पीजी पीएचडी फेलोशिप मिलती है, वहां से वो अच्छा एक अपना करियर बना सकते हैं। या तो बहुत ही अच्छा सर आपका इनिशिएटिव है सर, और मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ सर। अवश्य जरूर आओ दिल्ली में और कल है मुझसे सर। मिलो। मुझे हाँ खुशी कल मैं होगी दिल्ली में तुमसे आपसे मिलता मिलकर। हूँ सर। जी मैं सर तुमसे, कल मिलता हूँ हाँ, आपसे मैं। मुझे खुशी होगी मिल करके। बहुत अच्छा लगा तुमने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच विनय। है ओके ना? सर, कल मैं डिटेल इसमें से बात करेंगे सर। काफी मेहनत करनी पड़ेगी विनय, ठीक है? हाँ सर, मैं उसके लिए सर पीछे हटा हूँ सर। आप निफ्ट ओके। मेरे देख रहे हैं सर। या थैंक यू वेरी मच। ओके सर। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू से एनीथिंग एल्स? और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं? I'll request, yeah. किनका hand raising है? Who's raising the hand? Sir, this is Gaurav. I just want to ask something. हाँ, तो आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा जोर से बोलें। अपना नाम बताएं जरा, मुझे आपका नाम दिख नहीं रहा। सर, मेरा नाम गौरव है सर, और मैं एक अध्यापक हूँ। बहुत बढ़िया गौरव, बताएं, थोड़ा जोर से बोलें, आपकी आवाज अभी भी धीरे आ रही है। जो दुविधा मुझे है इस कार्य में सर, एक यही है कि जैसे हम लोग मेंटरशिप करते हैं उस समय हमें बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो इस बहुत गरीब परिवार से होते हैं और उनके पास कोई लैपटॉप या फिर कोई गैजेट नहीं होता ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए। ऐसी समस्या को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बहुत ही इट्स ए रेलेवेंट क्वेश्चन गौरव, जो शायद मुझे बताना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझसे छूट गया ये। हम लोग ने जब मैंने बताया ना कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाने के लिए फिर रिसर्च किया, जब तो एक हम लोगों के समय दिमाग में ये बात आई थी कि हम जो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो बच्चे के पास अगर ये लैपटॉप पर नहीं होगा या कोई स्मार्टफोन नहीं होगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो हम लोगों ने जो सर्वे किया उसमें हम लोगों ने पाया कि आज गांव में करीब करीब 85-90% परिवारों में, चाहे वो मजदूर परिवार ही क्यों ना हो, उसके पास स्मार्टफोन है। और इसलिए और बच्चे ये सारे कोर्सेज जो हैं स्मार्टफोन पे बहुत आसानी से पढ़े जा सकते हैं। सारे कोर्सेज ऐप बेस्ड हैं, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। अगर बच्चा कहता भी है तो कहिए स्मार्टफोन पे पढ़ो, और स्मार्टफोन पे सारे बच्चे पढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। तो डोंट वरी अबाउट इट, बट वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन गौरव, थैंक यू वेरी मच। And keep thinking about such improvements in future also in the project. Thank you, Gaurav. Yeah, anybody else would like to say anything? अजीत जी, sorry, हाँ, I mean, I'm not. मैं अनुरोध करूंगा उदय जी कि आप अपनी तरफ से, उसके बाद फिर शरण साहब भी अपनी तरफ से कुछ ऐड करें इसमें। उदय जी, आप पहले ऐड करें। एक हमारा ये था कि this before we launch this for these remaining 7 states of our listed of remaining 8 states. Yeah. Other than Rajasthan, 8 states. Yeah, correct. Okay, so they were supposed the CSC, because of the mistakes being done at the CSC in Rajasthan. So there was a thought for training of those CSC center VLEs or yeah. तो वो कुछ हुआ है या होने वाला है क्या? उसमें 2 चीजें की गई। CSC के टीम से ही बात करके उन लोगों ने खुद बताया और सही बताया कि हमारे जितने भी 6 लाख सेंटर हैं, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में करीब 5000 सेंटर अगर हैं, तो सभी 5000 वैलीज एक तरह के नहीं हो सकते। कोई थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है, कोई थोड़ा ज्यादा डायनेमिक है, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ठीक से सही बच्चों तक पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए हम हर जिले में अपने वेलीज को सिलेक्ट करेंगे जो अच्छे वेलीज माने जाते हैं।
जो थोड़ा समझदार हैं, स्मार्ट हैं, डायनेमिक हैं, जिससे कि हमारे प्रोजेक्ट में जो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का, वो उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और काम तेजी से आगे बढ़ेगा। तो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग नाउ। और उन्होंने इन 8 स्टेट्स में भी सिलेक्शन अपने पूरे कर लिए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। राजस्थान में भी सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन पूरे कर लिए हैं। राजस्थान की एक ट्रेनिंग हो चुकी है, एक ट्रेनिंग कल होगी, और इन 8 स्टेट्स की भी ट्रेनिंग कल आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून में या परसों सुबह होगी। ठीक है ना। और उसके हम लोगों ने ये भी कहा है कि समय समय पर अगर मान लीजिए हम लोग ये देखते हैं कि कुछ खास तरह की मिस्टेक्स बार बार आ रही हैं ट्रेनिंग के बाद भी, then based on focusing on those mistakes, we will do again training after 10-15 days, no issues, क्योंकि हमें बार बार लोगों को बताना पड़ेगा। और हम लोगों ने पहले ऐसा किया था कि एक एसओपी बना के हम लोगों ने सभी जो उनको वीएलई कहते हैं ना, कॉमन सर्विस सेंटर जो चलाते हैं, उनको विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, VLE। तो वीएलई के लिए हम लोगों ने एक एसओपी बना दिया, और उसके बाद हम लोगों ने एक डूज एंड डोंट्स भी बना दिया। जैसे जो मिस्टेक्स राजस्थान से आ रही थी कि भाई वहां पे मार्कशीट के जगह पे उसने अपना फोटो अपलोड कर दिया बच्चे ने, और एक जगह पे तो बड़ा अजीब किया कि भाई जो इनकम सर्टिफिकेट के जगह पे किसी का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। दैट वाज आल्सो वेरी फनी। तो ये हो सकता है अनजाने में, नहीं जानने के कारण हो गया हो, इसलिए हम लोगों ने डूज एंड डोंट्स भी क्लियर बना दिए कि ऐसा मत करिए। कहीं कहीं लोग वो वेली अपना नंबर दे देते हैं, जैसे किसी का ट्रेन टिकट बुक कराना हो तो उसमें अपना नंबर दे देते हैं। तो हमने कहा कि भाई इस केस में अपना नंबर देने से काम ये इसलिए नहीं चलेगा कि जो नंबर आप फॉर्म में देंगे वही नंबर एलएमएस से एक्टिवेट होगा और उसी पर कोर्स मिलेंगे बच्चे को। तब खैर उसमें सुधार होना शुरू हुआ है। इसलिए मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में मेरी पूरी उम्मीद है कि मिस्टेक्स काफी कम हो जाने चाहिए। तो ये जो डूज एंड डोंट्स हैं और ये जो हम लोगों ने बनाए हैं, and if that can be shared with us also, suppose through our contact we know, I mean we can also get them sent to the CSCs जो हैं, वंडरफुल, डिसेमिनेट कर सकते हैं। या बहुत सही कहा उदय जी आपने। हम आज ही जो मेंटर्स का ग्रुप बना है ना, उस पे हम आज ही इसको डालेंगे, दोनों को, जो एसओपी और डूज एंड डोंट्स डाल देंगे। या थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल timely suggestion. Thank you. Sharan Saab, would you like to add something here? Sharan Saab, are you able to have, please? Yeah. Right. Ajit ji, so beautifully explained by you. Total, आपने ऐसा दे दिया है कि there is hardly any point to be missed. बहुत अच्छा है, and very encouraging. और बस मैं यही कहना चाह रहा था कि एक समय पड़ाव आता है उम्र में कि आदमी सोचता है कि लेट अस गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी। हमने अपने लिए तो बहुत कर लिया, जितना करना था कर लिया, बट वी डोंट नॉर्मली गेट अ प्लेटफॉर्म, या ऐसा मीन्स हमको नहीं होता है कि हम कुछ उनके लिए कर सकते हैं, या चाहे तो हमें उसका राइट सब्जेक्ट नहीं मिलता है, राइट लोग नहीं मिलते हैं, या जो भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जैसे एजुकेशन का तो कई बार हमने सोचा कि चलो गांव में बगल में जा करके थोड़ी देर बैठ करके पढ़ाएं, बट 30-40 किलोमीटर है, दूर है, वो जाना हर हफ्ते, यू कैन नॉट मॉनिटर इट ऑलवेज। सो मेरे ख्याल में दिस हैज बीन अ वेरी 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 नाइस प्रोजेक्ट फॉर पीपल हु वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मेंटरिंग प्रोग्राम आपका जो बना है ये, और इसमें 2 फायदा है। एक तो हमको सेटिस्फैक्शन होता है, मेरा टाइम बड़ा वेल स्पेंट होता है। दूसरा ये फायदा होता है कि it prevents me from growing older and older. Very correct, very well said. क्योंकि मेरे बच्चे तो हमारे से काफी बड़े हो गए हैं, रियली उनसे हमारा इंटरेक्शन इस तरह का नहीं होता इस लेवल का कि उनको मेंटरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है तो इस लेवल पे, और आदत पड़ी हुई है। तो यहाँ पे एक नया हमें भी अवसर मिलेगा, पुराना जो काम किया हुआ है कि बच्चों को अपने मेंटरिंग करने का, तो वी कैन अगेन रिफ्रेश आवरसेल्व्स, रिफ्रेश करने हम भी रिफ्रेश हो जाएंगे, एंड गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंडरफुल प्रोजेक्ट, और हम इसीलिए हम एसोसिएटेड भी हैं कि एंड इट इज बीइंग रन ऑन वेरी वेरी रॉबस्ट एंड साउंड लाइंस। कहीं पर भी जहां पर भी कोई मिस्टेक नजर आता है तो वी गो इन ए करेक्टिव मैकेनिज्म और फिर ठीक करके बढ़ते हैं उसमें। वंडरफुल।
and you very rightly you are taking suggestions from जो भी अच्छा suggestion आता है, you are implementing it very rightly. So I request all the mentors and all participants and all associates to contribute their might जहाँ तक हो सकता है, और encourage करें दूसरे लोगों को भी कि to join this movement. It's a kind of movement. तो लोग और इस movement को join करें. Very rightly said. अपने अगर spouse को भी कहें कि भाई आप भी करो, आपका time है, तो बहुत अच्छा रहेगा वो. So with these words, I think I wish all the success to the mentors and the mentees also, and to this project UDAN2. I think someone, Vikas, is there who wants to ask. Yeah, something. Vikas, you want to say something? Okay, Please thank unmute you. yourself and go ahead. Thank you, Shan Saab. Yes, Vikas, आपने hand raise किया है. It's a fantastic initiative, and I'm really privileged to be part of this. Thank you very much. I just wanted to ask, in terms of the mentors who are there and the students, if they show inclination towards a particular area of career that they want to go, and if there are others who have, say, specialized experience or knowledge in that particular area, to move or to send the kids for discussions with those mentor whenever at appropriate time. So is it possible for us to know or have a system where we know the areas of specialization or experience of the mentors, and can we or should we divert the kids basis whichever inclination they show towards that mentor? Very good suggestion, Vikas. What I would say is, let us keep it as an agenda for the future, because अभी जो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में अभी जो फोकस रखा है वो ये है कि उस हर नौजवान लड़के और लड़की को एम्पावर करके, उनको कोचिंग दे करके, जो नौकरी की तलाश में हैं उनको स्मार्ट बना के उनको एक ठीक ठाक अच्छी नौकरी मिले, जिससे कि जिंदगी में वो गरीबी की चंगुल से बाहर निकले. मे बी इसके जब थोड़ा ये स्टेबलाइज कर जाएगा प्रोजेक्ट, मे बी 6-8 महीने बाद, देन वी कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ, हम मेंटर्स की मैपिंग कर लेंगे कि भाई कौन किस एरिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. एंड देन वी कैन, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि मान लीजिए उसको नौकरी भी मिल गई, उसके बाद भी वो चाहता है किसी खास एरिया में स्पेशलाइज करना या उसमें आगे बढ़ना, तो फिर उसको उस मेंटर से कनेक्ट किया जा सकता है. दैट इज वन गुड थिंग व्हिच यू हैव सजेस्टेड, एंड विल कीप इट इन आवर एजेंडा maybe after 6 months or so. क्योंकि हम लोगों का ये मानना है विकास, हम लोग की ECF टीम का, कि एक जो काम शुरू किया है उसको अच्छी तरह फोकस करके पहले उसको एक स्टेबलाइज कर दें, सफल बना दें, एंड देन वी गो अहेड विथ अदर थिंग्स. उसमें हम वैल्यू ऐड करें लेटर ऑन, एंड योर्स इज अ गुड पॉइंट फॉर वैल्यू एडिशन. थैंक यू विकास. Sure, thank you, sir. Thank you for explaining. या केशव, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Hi sir, good evening. Good evening. Sir, it was a very nice initiative taken by you, and we are there to help you and help the kids who are who don't have the privilege to study, right? Sir, मेरा एक I have one concern कि do we have some milestone tracker? Suppose if 10 students are allotted to me, right, and they are preparing for some example for JEE, right, and 4 of them have been converted out of 10, so we can actual milestone will achieve when we will have a conversion, right? So do we have some milestone tracker, or so from where we can track the actual progress, or that sort of thing? Yeah, because I think again I would say my mistake, I should have mentioned it in my remarks. Each course which we are giving, whether it is for English language or personality development or recruitment examination coaching, each course has a built-in system of periodical evaluation. उसका ऑनलाइन उन लोगों के एग्जाम होते हैं, असेसमेंट होते हैं, और उसमें मार्किंग होती है, and those markings are shared to the student, to the mentor, and to us also, to the LMS team. इसलिए आपके पास भी हो जाएगा जब एग्जाम होंगे, तो भाई आपके मेंटी ने कितने परसेंट सही किया, कितने परसेंट गलत किया, that will go to the mentor also, क्योंकि तब मेंटर भी उसको सही रूप में गाइड कर पाएंगे, है ना? So this is part of the whole system. This is the way the tracking of the progress of the student would be done.
Understood, sir. Thank you so much for addressing my Thank you. concerns. Yeah, It was a thank you very great much. talking with you. Yes. Wonderful. Anybody else? I think if nobody else is there, then I think let us wish each other a very good evening today, and let us wish each other that we'll work shoulder to shoulder. We'll work very hard in a focused manner, and we will make those students, poor and underprivileged students, empower them to rise and shine in life. Thank you very much. Have a very nice evening to each one of you. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye.